Hi guys, welcome to my channel. After a long time, I'm back with my vlog. So we have planned this vacation for us. It is the most expensive, the longest, the most special vacation that we have booked. We have booked this like almost 6 months back, 6 to 8 months back. So there's a lot of money that has gone into this, a lot of planning, a lot of decisions had to be taken. And finally, अब हम 14th March को travel करने वाले थे. But there's so much that has happened since March 1st. This war started. Israel, Iran, US, and the Middle East is completely shut down. And because of that, our travel has been impacted. So we never knew that this could happen. But initially, I was not worried, thinking कि flights cancel होंगी तो it's fully refundable. Airlines refund completely. And जो हमने package book किया via a travel company, they'll refund it or postpone it. But apparently they're the one who completely disagreed to refund anything. They said they'll cut 1 lakh rupees as cancellation charges and the rest will be credited, which we can use for further travels with them. They won't give our money back basically, which is really bad because if we would have booked our trip individually, all the bookings, hotels or some accommodation, it would have been fully refundable because 24 hours cancellation policy hoti hai via MMD or something. But with this travel company, we have been stuck and इस वजह से हमने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया. टुडे फाइनली अब मैं पैक कर रही हूँ एंड यू सी अ फ्यू क्लिप्स फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज. वी हैव अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, देन बॉम्बे से हमारी मेन डेस्टिनेशन पे है. लास्ट मिनट कैंसिल हो जाए. वी बिन ट्रैकिंग द फ्लाइट सिंस लास्ट 1 वीक, तो इट हैज़ बीन प्रीटी मच नॉर्मल. बीच में एक दिन 24 आवर्स लेट थी और एक कैंसिल भी हुई है शायद. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स प्रीटी मच नॉर्मल एटलीस्ट अभी के लिए. वापसी की इट्स कतर एयरवेज एंड वो तो इट्स एंड हॉल्ट इनफैक्ट दोहा में, तो इट्स ऑब्वियसली कैंसल्ड. दोहा इज़ फुली शट, सो उसके लिए आई एम नॉट वरीड. बट द थिंग आई एम वरीड अबाउट इज़ बुकिंग अनदर फ्लाइट टू कम बैक होम. एंड ये ऑयल का इशू है, तो मे बी फ्लाइट्स और बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए. इट्स अ ह्यूज रिस्क दैट वी आर टेकिंग. बट I'm not going alone. My sister is with me, so we'll figure it out. That's what we're thinking. We are going shopping for our dream trip. ये ब्लू वाले वाटरप्रूफ है. ये रे जो मैंने ऑनलाइन देखे थे. हाँ, वूल. ये वाटरप्रूफ है. इसमें क्या इशू है तेरे को? ये वाले में 3000. ये थोड़ा लंबा लुक का है और ये पूरी फुल लाइनिंग नहीं है. ये देख, इसके अंदर ये फुल लाइनिंग है. कैन यू सी? वूल वाली. ओके, सो तेरे को बूट्स वाले चाहिए. पहले ये बता, लंबे चाहिए तो छोटे चाहिए? वैसे तो छोटे चाहिए. इसमें देख, इसमें भी है तो, पर ये दिस इज वूल और दिस इज बिग. आई डोंट लाइक दिस डिजाइन एट ऑल. यू चूज योर्स, फिर मैं अपना करती हूँ. आई थिंक आई विल गो विद दिस वन. 9000 फॉर वन टाइम. आगे पीछे तो पहनी होंगी. है स्नो कॉन्टैक्ट वाटरप्रूफ -17 डिग्रीज. तो ये ले लेते हैं. एक 7000 के वैसे. एक तो ये ले, नहीं 4000 है एमआरपी. हाँ, तो एक ये ले लेते हैं, एक ये पिंक वाला ले लेते हैं अगर तुझे पिंक अच्छा लग रहा है. आई वांट दिस डिजाइन. यू डोंट लाइक इट? दोनों ही सही लग रहा है मुझे. सिचुएशन चल ट्राई करते हैं. 41 ये तो पूरा पूरा सा है. ये मैं 42 लाई हूँ. 42 है ये. हाँ. हां, फिर ये बढ़िया है ना. पिंक लूज है काफ़ी, क्योंकि मेरे जो मैं लेगिंग पहनने वाली हूँ वो भी सॉक्स वाली है. वही बोल रही हूँ. उसके ऊपर एक और सॉक्स आएगी तो भी मेरे को लूज ही रहेगा. ठीक है मैडम, चल के देख. लाइक एक्सट्रीमली लूज. ऑल्सो यू वांट वाटरप्रूफ ग्लव्स. सबसे ज़रूरी है. ये रहा बस. यही है. ये पतले वाले तो नहीं? जो फिर मोटा ले. ये थोड़ा एस्थेटिक लगेगा. ये तो बिल्कुल वो लग रहा है स्कूटी चलाने वाले. हाँ, वही तो लग रहे हैं. Forgot to take my tag off. निकल गया. Thank you. We are going shopping, guys. लिफ्ट खुल के नहीं दिया. आ गई. Going shopping for our dream vacation. I have to buy sunglasses, goggles. ये अच्छा लगता है. मैं ये इसके साथ टांगा हुआ, कैसे पता लगेगा हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाउ डज दिस वन? थोड़ा विंटर वेकेशन से सोचना. ये हमने उबर ब्लैक बुक करी आज. वी आर रिच नाउ. जस्ट गॉट एवरीथिंग यूजलेस. काम की चीज़ हम कोई नहीं लाया है.
Just FYI, वेकेशन की शॉपिंग के लिए थे बट कुछ भी हो नहीं रहा है और वेकेशन भी डाउट में है. What's from Marks and Spencer? This is for my sister. This is for me. Sister got 2 pajama sets. This is one. This is the second one. Has cute hearts all over. Nice. So मैंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है. Got sunglasses. So welcome to my sunglass haul. Literally, this is one. I think it suits my face pretty well. Store. Yeah, ये भी अच्छा लग रहा है मुझ पे. And this is also mine. A bit experimental. I don't like this. Quite cool. क्या? It's very big. यार मुझे बार बार बोलने में डाउट हो रहा है, हम जा भी पाएंगे वेकेशन पे? Shut up. कभी मैसेज आया है. अबू धाबी में हुआ है ना, दोहा में भी क्या हुआ है, कतर में. बेसिकली मिसाइल वगैरह शुरू हो गया और हमारा हॉल्ट ही दोहा में है, सब फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं. सो if this gets cancelled we are screwed. Anyways, we got these rings, quite fashionable. Stack 2 bracelets. सब लिटरली छोटी छोटी चीज़ें 6000 का बिल बन गया. लेगो. तो हमें स्टोर दिख गया और हम घुस गए और हम एक बार घुस गए तो खाली हाथ नहीं आने वाले थे. Once this is Disney. Frozen. She's gone crazy. Frozen. We're going to make it abhi बैठ के hopefully. And we got one go-kart. Should be fun. काफ़ी अच्छे बड़े बड़े अट्रैक्टिव थे. बहुत एक्सपेंसिव बट कभी पहले यूज़ नहीं किया सो बनाया नहीं है. We thought छोटे से स्टार्ट करते हैं. होपी बिकॉज होपफुली हम विंटर वेकेशन पे जा रहे हैं. Heated warmers because that's all for this haul. It was a fun outing and now I'm very scared, worried because of the situation. I hope everything's fine. जब तक हमें जाना है कुछ भी पोस्टपोन कैंसिल ना हो. आई होप. बना देगी ऐसा. So we made it. This is my sister's. This is mine. Cute. It is 12th of March, almost 13th. We are flying out today itself on 13th to Bombay, and we have our flight from Bombay on 14th, I think around 3 o'clock in the morning. अभी तक पैकिंग शुरू भी नहीं करी है. We don't even have a packing list. I'm just starting to make one. And हमने अभी just file किया basically that we are going. Taking risk because Wonderon is not agreeing to give refund, and they have shared that only 96,000 will be refund. 96,000 cancellation charges और बाकी credit note वो भी refund नहीं होगा. Basically पूरा ही loss हो जाएगा. And flight का भी because हमारी flight cancel नहीं हुई है जाने की. So we've decided that we are going to go. Final है ना? Of course. अब क्या बचा है? फाइनल है. जा रहे हैं हम. सही लग रहा है सब मुझे. So मेरी बहन को सब सही लग रहा है. उसने गारंटी लिया हम जा रहे हैं. वेरी स्ट्रेस. अगर आइडियल सिनेरियो होता अभी हम बहुत खुश होते, एक्साइटेड होते, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. वी डोंट इवन नो कि हम हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी टाइम पे कि नहीं, हम वहाँ घूम पाएंगे कि नहीं, वापस आ पाएंगे कि नहीं. दिस वॉर हैज़ जस्ट डिस्ट्रॉयड आवर लाइव्स. एनीवेज, सो अब रात को बैठ के वी हैव टू पैक बिकॉज कल सुबह दोपहर को इनफैक्ट दोपहर तक वी नीड टू सॉर्ट एवरीथिंग एंड देन लीव इन द इवनिंग. There is a lot that needs to be done. And जब तक मेरी बहन फ्री होती है, let's do a Zara haul. मैंने कुछ कपड़े मंगवा लिए थे just in case जा रहे हो हम जा रहे हैं. तो ये तो काफ़ी गर्म है, बहुत सही है. मोटा एकदम है ना. सेल में था ये और ये I don't know how much but it's a nice pink sweater. Extremely thick, very nice, very warm. I love it. If I ordered a winter dress. But it isn't small. Oh shit, ये तो मुझे नहीं आएगा. सिर्फ स्मॉल साइज बचा था, बाकी सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया. सो आई थॉट लेट्स ट्राई बट नहीं फंसेगा. देन आई गॉट दीज पैंट्स विच लुक्स फाइन. यार डल सकती है ये. आई ट्राई इट आउट. देन वन मोर पेयर ऑफ पैंट्स. सो इसके नीचे आई कैन वेयर स्टॉकिंग्स एंड देन वेयर दिस ऑन टॉप.
maybe it will look nice, maybe not. इतनी गर्मी में ये सब गर्म सामान पहन के देखना पड़ेगा. The next day. Hey guys, quick update. Today is 13th of Feb, 4 p.m. 13th of Feb? Oh sorry, 13th March. And we have not finished packing. We've only done 10% of our packing. We're ordering food, packing bags because saman fit nahi aa raha hai. Roasted And chana. most likely we are going. We have to fly in next 6 hours, 5 hours. अभी तो कुछ भी नहीं है, नहाए तो नहीं है, कुछ नहीं किया. I forgot to do my haircut. My bangs have like grown this much. Need to cut them. And अभी तक hit नहीं हुआ that you are going. Because कुछ हो सकता है last minute. We also bought excess luggage because domestic flight है हमारी बॉम्बे तक, then international. पता है सारा ड्राई फ्रूट लग There's so much going on. ऑफिस से उठा लाती हूँ. I just cut my hair in the middle of the chaos and it's looking a bit messy. I mean bangs are messy but अभी I'm just gonna straighten them and see और required है कुछ cut करने का तो ठीक है. I didn't open my hair, just pony में मैंने निकाल लिए. Anyways पहले से cut हुए थे, I just had to trim them but it's not that easy. So yeah. Let me just straighten them and see कि कैसा लगता है. Okay, there's hair all over my face. Yeah. Ignore the mess. Right now it's almost 4:30 p.m. I have to leave in about next 2 hours and our packing is not done. Let me just quickly show you. I've ordered a few things from Blinkit. अगर obviously पहले से हमारा plan होता तो हम ये सब पहले से लेके रखते. DMart वगैरह से सस्ता लेके रखते. But now we had to order last minute from Blinkit. Let me show you all the things. Just like a short packing haul. Firstly, I got this essential thing. Frido का neck pillow. This is vacuum bags. Because some winter clothes carry kar rahe hain, I need to like put them in vacuum. So for that, got this suction thingy to vlog this trip because we're vegetarians and internationally you get very limited vegetarian food. Some kappa noodles from Maggi, poha, 4 soup, 2 tomato, 2 sweet corn, khakra. Yeah, some dry fruits, some protein bars, cheese with khakra, some cheese with khakra. Aloo bhujia for me. Yeah, that's all. I'm gonna go now and rush for my packing. So this is the situation of our packing. We haven't packed anything abhi tak. This is our luggage, 2 cabin, 2 check-in, these backpacks. And I think yeah, that's all. It's almost 6 o'clock. Our flight is at 9 o'clock. It will like depart at 9, so we have to reach by 7. It is 6:02. We have to reach by 7, but the ETA is like 7:15. And अगर last minute कुछ हो गया, we'll be. तो शुक्र है immigration नहीं होनी यहाँ पे. We are so late otherwise. And look at my hair, कंघी भी नहीं करी है. I've done nothing. Fingers crossed. I cut my hair last minute and this is the condition. I didn't get time to style them. हट गया लड़ाई करके. सवाल पड़ा. Yeah, magical. So by the way, we reached airport on time. Now we're having dinner from Domino's. We decided not to go to the lounge because time कम है, rush बहुत ज़्यादा है. Domino's बहुत टाइम ले रहा है. Just having Domino's one last time because खाने के बाद नहीं मिलेगा पूरा ट्रिप, कुछ भी नहीं मिलेगा. So cheese burst, enjoy one garlic bread, Coke, cheese dip. We have boarded the flight to Bombay. Check out our next vlog to find out if we reach the main destination or not. See you guys. Bye.